तो भाई हेलो दोस्तों, आई होप बहुत अच्छी से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। और मेरी भी यार इतनी पढ़ाई अच्छी नहीं चल पाई इस हफ्ते तो, ठीक है। एंड तो चलिए, इस बार हम लाइव मॉक चल रहा है IBPS PO का, इसको देते हैं। पहले हमने 2 बार SBI का दे रखा था, इस बार IBPS का देंगे, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट पे किया क्लिक एंड जब तक ये लोडिंग हो रहा है तब तक आप बताइए भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी सब्जेक्ट में। बाकी मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा देखो इंग्लिश का तो सही चल रहा है, बट दिक्कत मुझे आ रही है टाइमिंग में। मतलब टाइम छूट जाता है, मतलब क्वेश्चन छूट जाते हैं टाइम की वजह से। सो उसी की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी तो मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरा सिलेबस ही रह गया है। अभी साइड में दिक्कत आ गई है, फिर मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ आपको। तो ये चल गई ये साइट, और इसमें देखें तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 30 और मैथ्स के 35। तो उसमें यार SBI से थोड़ा हटके है। लाइक SBI में इंग्लिश के 45 पूछता है और 40 मिनट मिलते हैं, बट ये जो है 30 पूछ रहा है और 20 मिनट दे रहा है। ठीक है यार, इंग्लिश तो कर ही लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी भाई, जो लोग इस मॉक को देखने की, अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं कि लोग मॉक को अटेम्प्ट करने की कौन सा मेथड बेस्ट रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहले सेक्शन में इंग्लिश को अटेम्प्ट करूँगा, उसके बाद मैथ्स को करूँगा, देन रीजनिंग करूँगा, ठीक है। चलिए ओके। तो इसमें से अच्छा, इसमें तो डायरेक्ट सबसे पहले रीजनिंग खुली है भाई। चलो पता लगा, व्हाट द टाइम डिफरेंस सिटीज आर ऑफ डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सिटी E is 10 kilometers south of S. City M is 9 kilometers north of city Y. City L is 7 kilometers south of city S. City L is 7 kilometers south of city S. M. City R is 4 kilometers west of city E. City P is 2 kilometers south of city E. City L is 4 kilometers east of city M. City L is 4 kilometers east of city M. City L is 7 kilometers south of city S. क्या है? City L is 7 kilometers south of city S के। अच्छा, और क्या है? City L is 4 kilometers east of city M. City M is 9 kilometers north of city Y. तो यानी कि 3 ये 2 5 ये 2 5 और 4 9 Y 4 ये, ठीक है। 9 9 टोटल। सिटी B is 6 kilometers west of city W. City S is 10 kilometers west of city V. City S is 10 kilometers west of city V के। सिटी B is 6 kilometers west of city W. W कहाँ पर है भाई? City W is 7 kilometers south of city V. City B is 6 kilometers west of city W. So what is the distance between city B and city R? R तो यार ये कितनी है? 4 और 3 7 7 4 11। सिटी B एंड सिटी R
4 तो ये बची, फिर ये 3 बचेगी, 4 और 5 9। सिटी बी इज डब्ल्यू, सिटी डब्ल्यू 7 किलोमीटर साउथ ऑफ सिटी बी, सिटी बी 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सिटी डब्ल्यू, तो 6 किलोमीटर ये आ गया। सिटी एस विद रिस्पेक्ट टू सिटी बी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ मान लो भाई। If a meaningful word can be formed with the using today's letter of the word, then what will the last letter from the left hand of the third as formed? If no answer but not mark X is the answer, while no answer then mark Z as your answer. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh है तो उसका होगा कार्ड सी। एक्टर देन मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बन रहा यार, बाद में देखेंगे इसमें करो। All beakers are flasks. All beakers are flasks. All bottles are tubes. Only a few bottles are flasks. Beakers. All bottles are tubes. Only a few bottles are flasks. Bottle are flask or bottles are tubes. ठीक है, तो ये बन गया। Some tubes are not flasks. Some tubes are not flasks. Yes. Some bottles can be beaker. Some bottles can be beaker. हाँ हो सकती है। No tubes are beaker. No tubes are beaker. Can't say. First and second follow. Only a few tiles are marbles. Only granites are rocks. Some tiles are granite. Some tiles are granite. Only granites are rock. Granite ही rock है. So all no marble or rock. No marble or rock. पता नहीं यार. No granite or marble. No granite or marble. ये भी नहीं पता. All marble can be tile. All marble can be tile. Yes. ये few tiles are marble. Few tiles are marble तो हाँ हो सकते हैं। Only third follows. Only a few mats are carpets. Few mats are carpets. All mats are rugs. All sheets are rugs. Some rugs are not carpets. Some rugs are not carpet. Yes. Some sheet can be carpets. Yes, हो सकती हैं. No mat can be carpet. No mat can be sheet. हो सकती हैं. Can't say. Only 1 and 2 follows. 8 friends live in a 8 bunk bedded dormitory room of a hostel. And the leftmost column is numbered 1 and immediate right is 2, 2 till the rightmost number is 4. अच्छा तो 2 2 3 4 3 4 5 6 7 8 1 है ना। immediate right to 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 2 till the rightmost number is 4 4 तो each column is 2 story bunk क्या है 8 bunk bedded dormitory. Dormitory room hostel 4 columns 4 column है. And the leftmost column is numbered 1 2 till the rightmost number अच्छा अच्छा
वन रेड मोस्ट हैं, 2 3 4 5 6 7 8 number 4 equal to store bunk bed. The upper bed is bed A and the lower bed is bed B. R sleeps on a bed A of column 2 or column 2. W owns a lower bed in an even number column. ठीक है, even number column. W owns a lower bed. या तो इधर होगा या तो इधर होगा. And more than one bed are there in the left of W in the same row. More than one bed, ठीक है. The left and at a gap of 1 with B. T owns a bed above S. S owns a bed in the left and a gap of 1 with B. T owns a bed above S in the same column. Q and P own the bed next to each other and in the same row. Q and V. Next to each other and in the same row. Next to each other and in the same row. ठीक है. अच्छा, तो Q और V. V owns a bed in an odd number column. ठीक है. P Q R S T U V W इधर बचा. हाँ, P Q Q R S T U इधर बचा. R sleeps on bed. W owns a lower bed in the even number 4. One more than one bed there in the left of W in the same row. S owns a bed in the left and a gap of 1 with P. T owns a bed above S in the same column. Q and V open bed. ठीक है यार. Who owns a bed immediately above B? V. V के immediately above कौन है? B. How many beds are there to the right of U in the same row? 0. गलत तो नहीं बना दी. How many beds are there to the right of the U in the same row? Which bed does Q own? Q second row में upper वाला. Bed A column 2. Bed A column 2. वैसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई. Which bed does Q own? Q own करता है Q and V own the bed next to each other and in the same row. ठीक है. V या फिर थर्ड में बेड हो. Which of 4 of the following are alike in a certain way and forms a group which doesn't belong to that group? S Q U P W. S Q U P W. पता नहीं यार. T is related to S. भाई गलत बन गई मेरे हिसाब से. T is related to S. R is related to U in the same way. Yes, R is related to U in the same way. To U in the same way. As which one of the following is true? V is related to W. Q is related to W. Yes. S is related to R. R is related to W. बस Q own. चौथी में बेड A. एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड. एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में. एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड S और T दोनों ही है भाई. मेरे हिसाब से गलत बन गई यार. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू. T. हम बिटवीन X एंड V. X एंड V के बीच में कितने लोग बैठे हैं? X किधर है अपना? X and V.
एक, एक दो तीन चार। What is the position of T with respect to R? Second to the immediate left. Suppose four of the following are alike in a certain way and forms a group which one does not belong to that group. R T V S W. R T V S W. R T V S W. Where? Find out what one formula is. C D E F G H A B C G H I J K L X V U Z X S T U V P Q O P Q Q P Q R S X Y Z S T U V W X V का V V U V हाई स्कूल आर्ट हाई स्कूल साकर जोकर कोई नहीं A to Z फूक मत उड़ा देंगे क्रैक्स खाकर जी जी Sand buckets marked as dishes have different amount of water in it. Bucket B has one more water than bucket E, which has 30 liter water in it. Bucket B has more water than bucket E, which has 30 liter water in it. Only one bucket has more water than bucket D. 1 2 3 4 5 6 7 8 and only one bucket has more water than bucket D. बाकी सब ठीक है. Bucket A, which has 48 liter water in it, is more than bucket B and but less than bucket D. 48. Bucket G has more water than bucket C but less than bucket E. Has more water than bucket C but less than bucket E. So क्या होना A B C D E F. Which could be the possible amount of water bucket in bucket B? 33 और 48 के बीच में होगा. 40 हो सकता है भाई. How many bucket have less water than bucket A? 1 2 3 4. Which are falling like blue color. 7 people born in different color. Years, but not necessarily in the same order. The age is considered as in 2021. 4 people. 1 2 3 4 5 6 7. 1992, 1994, 1998, 2003, 05, 90. ठीक है. 2021 से काउंट कर जाएगी ना. 21 में से 1 या 20 16 4 20 21 3 हैं तो फिर 21 में से क्या 20 और 2 18 18 19 20 21. ठीक है. फिर 3 कम किया 19 20 21. फिर 2 कम किया 2 23. फिर 4 कम किया 27. फिर 2 कम किया 29. और फिर 1992 कम किया 30 31. तो भाई है ना. तो देयर इज कंसिडरेशन ऑल्सो लाइक डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक. M like maroon color. The age of W is multiple of 6. एक age of W is multiple of 6. Two people born between L and Q. Who likes yellow color? The number of people born before X is same as the number of people born after X. 1 2 3 1 2 3. Oh sorry 1 2 3 1 2 3. Who likes violet color?
Violet color लगता है इससे अच्छा. The person who likes blue color was born before W, but after the person who likes violet color likes blue color. ठीक है. Only one person sit between L and the person who like white color. Only one person sit between L and the person who like white color. और वाइट कलर के बीच में एक पर्सन बैठता है. L Q के just before. K was born before W. Who likes black color? ब्लैक कलर पसंद है. और क्या है, अगर हम क्यू को इधर बैठा दें, क्यू को येलो कलर पसंद है. कुछ गड़बड़ हो गया भाई. एन हु इज मैरिड टू एस इज द डॉटर ऑफ क्यू. क्यू की बेटी है. ठीक है. पी हैज टू डॉटर्स एंड ओनली वन सन. टू डॉटर एंड ओनली वन सन. वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ क्यू इज अनमैरिड. वन ऑफ द डॉटर ऑफ क्यू इज अनमैरिड. ठीक है. एक और बेटी है इसकी. W is the sister-in-law of V. W is the sister-in-law of V. U is the granddaughter of Q. U is the granddaughter of Q. P is the maternal grandfather of R. T is the maternal uncle of R. ये नहीं हो पाएगा भाई. भाई टाइम ओवर हो गया मेरे हिसाब से. ये लिपितल गलत हो गई है. क्या ही कर सकते हैं भाई. अब अगले सेक्शन पे आओ. क्या इंग्लिश. चलो इंग्लिश सही चीज़. What could be the reason behind a hummingbird buzzing around someone's face and trying to peck the eyes? ठीक है. So you are following the actual. Who has to have been given that name? The hummingbird look like a bright flash of sunlight. Which of the following best describes the emotion that the author feels when describing hummingbirds? Which of the following would be the most appropriate title for the passage? Which of the following the Antonio of rapid? The Sony of puncture as puncture is the message. ठीक है. All hummingbirds are beautiful, but they are found only in the western hemisphere. The crest of the tiny head of one of these signs, like a crest of the three head one of these signs, is a sparkling crown of colored like the shades of color that adorns breast. Equally brilliant as a bird flight from the one object to another, it looks like more like a bright flash of sunlight than it does like a living being. But why are hummingbirds so called? It is because they make a soft, humming sound by the rapid motion of their wings. Motion so rapid that as they fly, you can hardly see that they have wings. Hummingbirds' brain makes up a whopping 4.2% of its weight, proportionally as the largest of any birds. By comparison, our brains are 2% of our body weight. Inside data break brain is a veritable encyclopedia of important information. Studies have shown that birds can remember every flower they have ever visited, including of migration routes. They figure out how long to wait between visits, so the flowers have time to generate more nectar. They can even recognize humans and know which ones can be counted to refill empty hummingbird feeders. Hummingbirds have terrifying vision. They can see even every color we see can, and their eyes can process a UV light, which means they can also see some colors we can't. On top of that, hummingbirds are among the many animals gifted with a third set of eyelets. These translucent flaps of skin, nose, and penetrating membranes that act like natural flight goggles. In the hummingbird's eyes as the little birds zoom through the air. No other bird on earth can stunt like a hummingbird. They can fly also forward or backward, hover, and even fly upside down, and they do all of this so fast we can't even see it, beating their wings between 70 and 2 times per second. Their power, precision, and agility allows them to reach speed up to 3 miles per hour while flying and 60 miles per hour while disobeying. Their mad flight skills have made them a subject of great scientific fascination. The nest of the smaller hummingbird is about the size of a very small hen's egg, and it is attached to a twig, so no thicker not than a steel knitting needle. It comes to have been with a cotton fiber and is covered with the softest bits of leaf and bark. The eggs in it may be about as large as a sorghum. When you approach the spot where one of these birds has built its nest, to be careful. The mother bird will dart at you and try to peck your eyes. Its sharp beak may hurt your eyes more severely and even destroy your sight. The poor little thing knows no other ways of defending its young. Instinct leaders
that you might carry off nest if you find it. However, if a hummingbird whizzes around your face, it was probably attracted to your eyes, and not because it intends to puncture them with its needle-shaped bill, which is more like a straw than a stiletto. Many animals strictly associate large forward-facing eyes with predators, and hummingbirds, being both intelligent and masters of evasion, will often approach to the size of the threat. So, if another object of interest proves to be something dangerous, a cat, owl, snake, wanted a hummingbird response to harass the predator from a place safe position while raising the alarm to protect other birds. What could be the reason behind a hummingbird buzzing around so much space to pack the eyes? It attract to the person's eye. It may be sizing a threat from a approaching predator. A way of putting its young ones. Yes, both are, all are correct. Which of the following have is the actual reason for hummingbirds to have been given that name? Known by the rapid motion of their wings. While flying very fast, they sing making no. Why does the author say the hummingbird look like a brat fly? The crest of the knee shade has seems like a brat, yes. As the bird moves very fast, the colors move like a flash, and the shades of color that adorn its breast are brilliant. Floods from one object to another. It's more like a flash, bright flash of sunlight that does like fast. Move like a flash. All ही सही ला रहे हैं वही तो भाई. Page of following best emotion that the author feels when describing from casual, formal, disbelieving, impressed. Impressed है भाई. What about the best motion? Magnificent hummingbird. Why are hummingbirds strong? Why are they so beautiful? Birds of the western hemisphere. Magnificent hummingbirds. When Antonio rapid का slow. अगर वे synonym puncture. खाली कर देना, ड्रिल कर देना भाई. पंक्चर कर दिया. शार्प एम्प्टी कर देना. पंक्चर एम्प्टी कर देना. प्रूडेंट होशियार. द बैंक adopted prudent lending policy to reduce long-term credit risk. सतर्क. It could be prudent for investors to diversify their portfolio through during volatile markets. The major prudence decided to ignore early warning. They had to ignore early warning signs of default. Only one and two. Discretionary means spending often discretion. The officers exercise discretionary powers while approving the loan. The company discretion funds towards technological upgrades. Discretionary. Discretionary. Machines that make calculations based on binary logic, ones and zeros, are not very good on at capturing the uncertainty inherent in quantum mechanics. Coral reefs are often called the rainforests of the sea due to their incredible biodiversity. These vibrant underwater ecosystems are primarily built by the tiny animals called coral polyps. These algae live within the coral tissue, providing them with up to 90% of their energy through photosynthesis. क्या है? Ursa has made a mutually beneficial relationship with members of algae. These algae live within a coral tissue, providing them with up to 90% of their energy through ocean, despite ocean, without photosynthesis. However, this delicate balance is under threat. When ocean temperature rises, coral becomes stressed and expel the algae living in their tissues. Expel the algae living in their tissues. This event known as coral bleaching leaves the coral colorless and vulnerable. Without the algae, the coral loses its major source of food and is more susceptible to disease. Susceptible to disease. So, since the coral will eventually die, the
Benefit of coral reefs has devastating consequences. The loss of coral reefs have devastating consequences. Hmm. Hmm. A comprehensive strategy for urban renewal must prioritize the development of green spaces, which improves public health and also must enhances the overall quality of life, which enhances public health and also prioritize the development of green spaces for all residents of the city. D. Achieve last में a comprehensive policy. A comprehensive strategy for renewal must prioritize the development of green spaces, which improves public health and also the quality of life for all residents of the city. Yes, yeah. The painting's original vibrant palette, a significant finding that will reshape our understanding of the artist's early stylistic period. Beneath layers of grime, the conservators discovered the painting's original vibrant palette, a significant finding. Beneath layers of grime, the conservators discovered a significant finding. Discovered the painting's original vibrant palette, a significant finding. Finding. Mm, an innovative sensor technology embedded in the football is designed to provide real-time data, making some of the game's operating references and business accuracy when most crucial calls. Acha. An innovative sensor technology embedded in the football is designed to provide real-time data, offering referees unprecedented accuracy when some of the game's most crucial calls. AVDCE है क्या? CE है तो. The new trade agreement aims to streamline commerce by harmonizing regulations, and it also establishes to resolve any with a specific mandate and it also establishes a joint committee to any future disputes. एक बार DT आता. The new trade agreement aims to streamline commerce by harmonizing regulations, and it also establishes a joint committee with a specific mandate to resolve any future disputes. Neuroscientific studies have demonstrated that regular mindful meditation can induce structural changes in the brain, enhancing areas associated with emotional regulation and cognitive flexibility. ठीक है, E से वो start होगा भाई. To demonstrate that regular mindfulness and the correct option. The loss of snow there has repercussions for a vast range of ecosystems and wildlife, as well as cities and farms downstream that rely on rivers that start in these mountains emerge. Food waste is a monumental problem. Monumental problem आएगा भाई, monumental problem नहीं. And this nascent trend with a buzzy new name designed to appeal to consumers could help. Food waste is a monumental problem, and this nascent trend with a buzzy new name designed to appeal to customers. Quality is assured by using well-honed processes based on testing and monitoring large number of parts.
The process is done the same way every time. If your cat doesn't need, it could mean he's a little. If your cat doesn't need it, it could mean it is a little stressed, or it could just be that your cat doesn't prefer relaxation or relaxation in that manner. One third of the cats show this in a study. Cat doesn't need. It could mean he is a little stressed, or it could just be said that your cat doesn't display relaxation or relaxation in that manner. One third of the cats show that. So Mahatma Gandhi's non-violent resistance played a pivotal role in India's independence from British colonial rule. Colonial की spelling गलत है भाई. Globalization is a process of growth and interconnection with economies aided by transport. Process interconnection. Connection ही गलत है भाई. Peculiar, weird गलत है भाई. Weird. Apprehension की गलत है भाई. Weird की सही है. 5 मिनट बचे. The paramedics worked tirelessly to resuscitate the drowning victim, restoring. Paramedics resuscitate the drowning and restoring. Though no rats perished in the original 1950 experiments, but later experiments did seem to demonstrate the deadliness of electrode-induced pleasure. Though no rats perished in the original 1950 experiments, but later experiments did seem, but later experiments She and her colleagues believe that acceptance reduces our perceptions of social threat, which allows our lonely feeling to dissipate and makes us more open to social connection. That which allows our lonely feelings. तो इंग्लिश का तो वही हो गया. इंग्लिश का तो आसान थी यार. पंक्चर का मतलब छेद करना, एम्प्टी करना, खाली करना. शार्प. ड्रिल का मतलब होता है छेद करना. ठीक है. कैविटी. If your cat doesn't need, it could mean he is a little stressed, or it could just be that your cat doesn't display relaxation or affection in that manner. One third of the cats shows this in a study. ही क्यों लगाया है बिल्ली के लिए? इटाना चाहिए ना यार. इसको मैं थोड़ा ना रिस्क नहीं ले रहा भाई. नेगेटिव हो जाएगा फालतू में. नेक्स्ट सेशन दे. अब भाई मैथ की बारी है. मैथ के लिए तैयार हो जाओ. 8 756 माइनस का 16 3 19 बराबर एक्स प्लस 8 पंजे 40. 56 में से 40 गया. 16 में से 19 गया माइनस का 3. 200. चलो 5 6 बन गया. एक कैरी
और अच्छे तो 8 8 से 41 डिवाइड बाई सेकेंड 9 और 17 से 5 के तो 29 9 81 1 8 कैरी 18 सेकेंड 29 58 29 3 29 27 7 2 कैरी 6 तो 8 87 नहीं 29 नहीं 58 6 6 7 तो 26 60 29 9 कम 9 99 81 1 8 कैरी 9 तो 18 26 तो 29 गुना आएगा 29 का स्क्वायर 30 और 5 एक्सेल होगी 5 माइनस का 5 एक है 2160 440 1600 4 3 12 4 चौके 16 4 पंजे 20 कई 4 चौके 16 54 डिवाइड बाई 15 माइनस का 505 5x 15 चौके 60 जीरो 6 करिए 15 पंजे 75 5 80 81 810 माइनस का 505 5 30 माइनस का 5 61 व्हाट कुड सम 4 5 गुणे 33 डिवाइड बाई 45 7 में सिक्के 6 और 6 तो 4 33 3 से काटा 11 3 से काटा 15 15 दूनी 30 30 10 15 17 105 27 297 इसका 46 7 से 13 एक कैरी 30 और 4 34 तो इसके लिए भी 7 डैश का क्यूब 19 में 19 12 में से 9 के 3 और 2 से 1 17 ठीक है 17 माइनस 27 को 729 बराबर का 23 एकम 23 3 2 कैरी 3 3 9 3 6 70 71 प्लस 122 3 2 5 2 1 3 7 1 8 8 35 7 29 9 5 14 1 कैरी 3 6 8 7 15 डिवाइड 17 17 34 51 68 85 तो 36 53 34 92 आई भाई the total time taken by a boat to row downstream and come back to the starting point is always hours the speed of the stream is 36 and the time taken by the boat to row upstream is 20% more than time taken by the boat to row downstream stream take a time taken by a boat ठीक है time taken by the boat to row upstream to downstream is 200% more यानी कि अगर इसमें 1 ले रहा है तो 2 3 ले रहा है then what is the ratio of upstream speed of what is the ratio of upstream speed of go down time का speed और distance सेम है क्या अपस्ट्रीम की 36 है स्पीड का रेशो हो गया ये 1 रेशो 1 के 36 है 18 18 108 हो गई डाउन स्ट्रीम स्पीड ज़्यादा भी हुई है ना तो क्या है रेशो होता है अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पूरा यही होता है 1 रेशो 3 होगा भाई इन टाउन 25% चिल्ड्रन एंड रिमेनिंग आर एडल्ट्स 25% ऑफ चिल्ड्रन 75% आर adult. If 20% of the children and expulsion of adults migrate to another town, then the original population to that remains percent of the original population that remains in the original town is 83.75%. यानी बाकी से भाग गई 83.75% का मतलब कितना हुआ 83.3/4 4 3 12 1 कैरी 8 से 33
335/4 भाग गई इतनी जनता। सौ से कटा 5 10 5 के 30 5 से 35 67 बटा 80 जनता भाग गई। यानी कि अगर टोटल 80 जनता थी, 80 का 50% 3/4 80 जनता थी मान लो टोटल, तो 75% यानी कि 3/4 80 का 20 थी 60 ये थे और 20 ये थे। ठीक है, अगर 67 रह गई तो कितने भाग गए? 20% बच्चे भाग गए, 80% बचे, 20% भाग गए, तो 5 4 भाग गए, 16 बचे हैं। तो 7 में से 9 5 में से 4 49 नहीं बचे हैं। टाउन कितने परसेंट भाग गए? इसमें हो गया 1 और 5 में से 11 लोग भाग गए, 11/60 लोग भाग गए, है ना। 60 कितना हो गया भाई? 3/5 55/3 3 कम 3 2 कैरी 3 8 24 1 कैरी 0 3 3 18.33%, 18 और 27। A trade bought 80 kilogram of sugar at 20 per kg. Due to mistake, he calculated the cost price as 16 per kg and marked by this by. ठीक है, एक ट्रेड बॉट 80 किलोग्राम of sugar at 1600 किलो 16 सीपी था हमारा 1600। So he calculated the cost price as 16 per kg and marked up the price by 50% on the incorrect cost. $2500 कर दिया उसने। He sold the entire lot at this price and the actual profit or loss percentage कितने का हुआ उसका? फाइंड मिसिंग टर्म 14 6 20 21 42 42 5 3 ना फिर 42 में 5/42 ये 3 3 9 3 3 15 3 3 12 2.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना 3.5 गुना 3 15 का 7 3.5 गुना 7/2 15 7 105 105 7 21 22 5/2 102.5 मिसिंग टर्म 34 20 कम किया 34 20 कम किया 14। इतनी आसान होगी क्या? मिसिंग टर्म 4 के 4 के 9 39 फिर 5 अच्छा बढ़ रहा है, ये घट रहा है। तो 74 में 6 बड़ा 80 और 10 8 छोटा 14 ये बड़ा। ठीक है, फिर बस ये बड़ा, फिर 18 से 9 के 9 4 14 16 में से 3 गया 14 का अंतर है तो 14 घट रहा होगा। हाँ तो 14 घट रहा है तो 8 में 4 के 4 और 8 में 4 के 4 144 बचा भाई।
अच्छा बढ़ रहा है ना, तो 14, 8 से 12 एक कैरी, 9 9 5, 8 से 12 2 एक कैरी, 9 और 1 10, 0 एक कैरी, 2 से 2 56, 2 56, 20 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 9 6 5 6 के 9 और 6 में से 5 1 96 अंतर, 9 6 5 1 13 का अंतर, 14 का अंतर, 15 का अंतर, 225 765 में 225 जोड़ा, 0 एक कैरी, 8 2 10 0 एक कैरी, 8 2 10 1000, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 225, 7 से 65 में 225 जोड़ोगे तो 5 5 10 0 एक कैरी, 8 1 9, 7 7 7 2 9, 9 से 90, 82 दूनी 16 4 8 दूनी 16, 64 इसका 2, 66 दूनी 6 दूनी 12 एक कैरी, 32 33 332 इसका 3 कैरी है ना, दूनी 35 दूनी 70 और 3 दूनी 670 उसका 4 674। What is the total of BMW and Toyota cars got washed in shop A and shop B together? BMW और Toyota कार 250 260 270 280 290 360 70 280 60 टोयोटा कार ऑटो वेस्ट 300 310 320 200 240 0 8 2 10 और 16 10 20 0 2 के 4 5 5 3 8 10 1000। If shop C washes car which is 30% or 50% more than the number of Ford and Suzuki cars respectively washed by shop B, find the total number of Ford and Suzuki cars washed by shop C together। देखो, if shop C washes car करती है which is 30% and 50% more than the number of Ford and Suzuki cars respectively washed by shop B, total number of Ford and Suzuki cars washed by shop C together। ठीक है, फोर्ड की कार शॉप बी के द्वारा कितनी बेची जाती है? 400, 30% ज़्यादा बढ़ा के 3/10 13/10 13/24 10 5 20 बेचता है और 25 मोर देन नंबर ऑफ सुजुकी कार्स वो 350 360 1/4 5/4 90 90 450 0 57 55 970। What is the average of the number of Suzuki cars bought by shop A, Rolls Royce car shop by shop A and shop number of BMW cars bought by shop B together? What is the number of Suzuki cars washed by shop A? 240 Rolls Royce car washed by shop A 100 110 120 and number of BMW cars by B 240 0 4 4 8 2 10 0 एक कैरी 3 2 5 1 6 600 का एवरेज 200। What is the difference between the number of Ford cars washed by shop A and shop B together? Number of Ford cars washed by shop A and shop B together. Ford cars shop A and shop B 450 460 और 400 860 and 240 620। What is the ratio between the number of Toyota cars washed in shop B?
With respect to the number of Suzuki cars was in shop A. चार से चार छक्के चार सत्ते 7:6. If a train crosses a pole in 60 seconds and a bridge of 500 meter on 52 seconds, find the time taken by it cross to platform. ठीक है, ट्रेन की लेंथ निकालो एंड 36 सेकंड को अपनी लेंथ को निकाल पार करती है स्पीड. एंड ब्रिज ऑफ 560 मीटर लॉन्ग इन 52 सेकंड से पार करती है. बराबर कर दिया. 4 में 36 4 कम 4 4 में 12 तेरा एल बराबर का 9 गुणे 560 इसका 9L 9 4L बराबर का 9 गुणे 56 4 कम 4 एकम 14 28 42 56 14 28 42 56 70 84 98 इस बार 126 मीटर आगे लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड फाइनल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ 910 मीटर लॉन्ग. 126 डिवाइड बाई 36 4 से 9 9 से 4 9 कम 9 23 4 7/2 7.5 3 7/2 मीटर पर सेकंड 910 मीटर लॉन्ग 6 2 3 9 10 136 7/2 7 कम 7 3 7 चौक 28 29 30 31 32 33 56 7 56 48 96 296 ग्रेट में 6 कम 6 6 चौके 24 6 पंजे 6 के चौके 24 ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ 910 मीटर लॉन्ग. केसलेट आ गई है. द एवरेज हेड ऑफ 100 गर्ल्स 80 गर्ल्स इज 190 सेंटीमीटर. द एवरेज हेड ऑफ 60 गर्ल्स इज 160 सेंटीमीटर. देन फाइंड द एवरेज हेड ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स. एवरेज हेड ऑफ 80 गर्ल्स इज 190 सेंटीमीटर एंड द एवरेज हेड ऑफ 60 गर्ल्स इज 170 रिमेनिंग गर्ल्स. चार रेशो 3 180 1830 है 1836 4 720 क्या हो गया 51 510 इसका हो गया 0 2 3 230 बराबर कितनी 20 लगे हो गए 230 सेंटीमीटर. The height of the cylinder radius of cylinder height of the ratio of the height of the radius to the radius of the cylinder is 3:1 and TSA of the cylinder log is this. The volume of the log TSA of cylinder 2 pi r है r plus h 4 22 11 कम 11 11 कम 11 2 11 22 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 7 112 एक की वैल्यू 49 आ गई है 7 गुना हो गया तो वॉल्यूम हो गया 7 की 343 गुना होगा 7 का मतलब होगा 7 कम 7 28 29 30 3 होगा 143 ये कट जाएगा 7 से 141 7 कम 7 नहीं होगा 231 7 कम 7 21 तो गई 7 21 है तो भाई 14 सेकंड बचेगा इतनी से कैसे छूट गई भाई. Parliamentary so that data regarding income as पे जो जान गई और revenue is 10% of the income जान गई भाई छूट गया यार ये. अरे यार 2 गैस छूट गई पाई चार्ट छूट गया. मैथ भी अच्छी नहीं रही यार. कितने 47 स्कोर बना परसेंटाइल वगैरह कितनी रही देख जरा.
ये यार क्या, ये क्या है भाई? अभी तो अपना टेस्ट हो गया था। अबे यार 47 नंबर होने यार, कम का नहीं यार, काफ़ी ज़्यादा कर सकता था मैं, पाई चार्ट बुक कर सकता था पूरा। अभी नंबर कहाँ से चले गए? ये हॉलीवुड की वेबसाइट में भाई ये दिक्कत रहती है हमेशा, ये साइट क्रैश होती है। ठीक है, कभी रिजल्ट भी टाइम पे नहीं देती है, तो एक बार चेक करते हैं। तो बस ये हमें ये दिख रहा है 52 सवाल सही थे, 47 नंबर बने, 12 रंग हुए, 36 सवाल छूट गए भाई। 36 में तो यार मैं तो इंग्लिश में जो मैथ का अपना सेक्शन था ना यार, ये वाला ये कर लेता। ठीक है, ये पाई चार्ट बहुत आसान था, मतलब दिख रहा था, इसे भी कर लेते थे आराम से। ये बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। दिक्कत मेरे पास यही रहती है कि मेरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। अरे भाई इंग्लिश तो अच्छी गई, ये रीजनिंग भाई पूरी गलत चली गई मेरे हिसाब से। हाँ ये वाला तो कल चला गया। चलो वो देखना, ये यार देखना था, वो साथ 8 वाला ये कल चला गया। यू इन द सेम रो 2 थे। अच्छा ये थोड़ा सही चला गया। ये वाला मैंने क्या इसका मतलब क्या लगा था, अगर मैं लगाता इसका बिलोंग टू डेड ग्रुप, तो एक बार देख लूँ बदल खा गई। SQUPW SQUPW गलत हो गया जाता है यार, अगर ये से लगाता तो ये भी गलत जाता भाई। इसकी कैसे बनी क्या? TRVQ SUPW, अरे बस यही गलती आ रही थी, TRVQ SUPW। अच्छा बस मेरे पास यार, मेरा क्या बना था, मेरा बना था TUVQ SRPW बना था मेरा, बट ठीक है, बस दो चीज़ों की पोजीशन मेरी गलत हो गई थी, बाकी सही था। अगर ये तो चीज़ सही रहता ना तो ये पूरी बदल हो जाती है आराम से, इसके भी नंबर हो जाते 13 14 15 भाई, ये तीनों के नंबर मिल जाते यार, अगर तुम थोड़ी सी टाइम लगा के सही कर देते ये भी मिल जाते यार। बड़ी गलती हो गई भाई। तो यार यही चीज़ थे, मॉक दे के यही चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि तुम्हारे क्वेश्चन कैसे ना छूटे। चलो अभी मॉक में छूट रहे हैं उसमें कोई बात नहीं, बट रियल एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए। सही है, तो बस यही मैं सीख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस कैसे गलत ना हो। ठीक है, अब मैं इसका अच्छे से एनालिसिस करूँगा। अब मैं चलो बात करते हैं।